Page number 62. He turned right along Home Street and entered Forbes' building. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. She searched through the telephone list and the staff list and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I'm afraid I can't find anyone of that name, either here or in any other branches. Are you sure he works here? This was a blow not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. Okay, अब यहाँ जहाँ पर ये जिस बिल्डिंग में गए थे फोर्ब्स बिल्डिंग में, वहाँ पर इनने मिस्टर विनय गायटोंडे के बारे में पूछा और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने ढूंढा तो कोई भी ब्रांच में उनका नाम नहीं था और उसको ये डर लग रहा था कि शायद इनको या तो मर चुके हैं और अगर ये मर गए हैं तो इनका बच्चा भी यहाँ मीन्स नहीं होगा या बॉर्न नहीं हुआ होगा. He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. अब वो टाउन हॉल की तरफ जा रहे थे जहाँ पर लाइब्रेरी थी. Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka, Volume 2 up to Samudragupta, Volume 3 up to the Muhammad Ghori, and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. Reading volume 5 from both end inwards, Gangandhar Pant finally converged on the precise moment where history has taken a different turn. That page in the book described the Battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashivrao Bhau and his nephew, the young Vishwas Rao. The book did not go into a blow by blow account of the battle itself. Rather, it elaborated, it detailed its consequence for the power struggle in India. Gangandhar Pant read through the account evidently. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. Okay, अब यहाँ पर लाइब्रेरी गया, वहाँ पर उसने अपनी खुद की जो लिखी हुई थी, वो हिस्टोरियन था, उसने अपनी खुद की बुक्स लिखी थी 5 वॉल्यूम. स्टार्टिंग से उसने जो भी पढ़ी थी वो सब वही था जो अशोक, समुद्रगुप्त और मोहम्मद गौरी औरंगज़ेब के बारे में था. सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले हुआ था, मगर 5th वॉल्यूम जो था वो कुछ डिफरेंट होने वाला था क्योंकि जब पानीपत की बैटल हुई थी और मराठाज ने अब्दाली को हटा दिया था तो वो आराम से वहाँ पर रह रहे थे. और जो बैटल थी उसका ऐसा एक एक करके नहीं बताया गया था कि कैसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ. वो जनरली सिर्फ उसका स्ट्रगल बताया था कि कैसे उन लोग ने स्ट्रगल किया उस बैटल में और कैसे वो लोग जीते. तो वो वाली बातें बताई गई थी. ये ज़रूर इन्हीं की बुक थी मगर इनने अभी तक पढ़ी नहीं थी और ये पहली बार इसको पढ़ रहे थे. Page number 63. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in the northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its exceptionalist program. ओके अब यहाँ पर जैसे जैसे मराठा लोग जीत रहे थे वैसे वैसे उनको बूस्ट मिल रहा था और वो अंदर से काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे थे. नॉर्थ इंडिया में उनकी पावर चल रही थी और ईस्ट इंडिया लोग ने अपने आप को थोड़ा सा दब चुके थे वो और उनने अपने आप को थोड़ा सा साइड लाइन कर लिया था.
For the Peshwa, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and eventually retired from the state politics. अब ये वही सब बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, जहाँ पर विश्वास राव और भाऊ साहिब की चलती थी और दादा साहिब को साइड कर दिया गया था. To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over the India. अब विश्वास राव जो मराठा के हेड थे, विश्वास राव और माधव राव उनका जो भाई था, दोनों ने पॉलिटिकल कंसर्न अपने सिर पे ले लिया था, अपने ऊपर ले लिया था और वो सारी चीज़ों को बहुत हिम्मत और सिस्टमैटिकली काफ़ी अच्छे से इंडिया को चला रहे थे. The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, and Madras, just like a European rival, the Portuguese and the French. For political reasons, the Peshwa kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in यूरोप. ओके, अब यहाँ पर पेशवा लोग जो थे उनने मुग़ल को ज़िंदा रखा था दिल्ली में, जिससे उनका भी थोड़ा बहुत चलता रहे और यहाँ से जितने भी पूना में जो रूलर्स थे उनको ये चीज़ पता चल रही थी कि यूरोप में टेक्नोलॉजिकल एज आ चुकी थी. They set up their own centers of science and technology here. The East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offers aid and experts. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. अब वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह रही थी कि हम इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे. और उनको ऐसा करने को दिया भी जा रहा था, मगर सिर्फ लोकल एरिया में ही. The 20th century brought about the further changes. Inspired by the West, India moved towards a democracy. By these, the Peshwa had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. The Sultanate at Delhi survived even this transition, largely because it wielded no real influence. The Shahenshah of Delhi was no more than a figurehead of rubber stamp, the recommendation made by the central parliament. As he read on, Gadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country he had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was from a position of strength, and for purely commercial reason it had allowed the British to retain. Okay, अब यहाँ पर जब ये सारी चेंजेस आए 20th सेंचुरी में, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई. डेमोक्रेसी के बाद जो दिल्ली में सुल्तान थे या जो मेन शहंशाह थे, वो सिर्फ एक हेड रह गए थे, उनकी ज़्यादा चलती नहीं थी, पार्लियामेंट की चलती थी. और इनने आगे बढ़ा तो इनको पता चला कि इंडिया कितना अच्छे से इंडिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया है और वाइट मैन की स्लेवरी ना करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करी है और सिर्फ ब्रिटिश लोग को उतना ही करने दिया जितना थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, उनको ज़्यादा इधर रहने नहीं दिया.